Assalamu alaikum. Today we are building a secured banking network system, and in this network system we will have our three departments in each floor, and in each floor the department will contain its individual router, and in individual router they will have their own private network, and these three routers of individual departments will be controlled by a one main router which will be upstream of all of them. So basically we are following a topology uh, that will be secured, and they cannot be attacked by any outer resource or any outer attacker. So in ground floor we will have our reception department, and in first floor we will have our managing department and HR department, and in third floor we will have our finance department. Basically the two departments, reception department and managing department floors, will communicate with each other, but the department at second floor, the finance department, will not communicate with either of them because it needed to be secured. So we will not route their communication and their IPs on main router. So basically all the traffic that gonna route between managing department and reception department will go through the router upstream. That will be the main router of all of three of routers in each department. So basically first we're gonna build each department and their individual private LAN, and then we will connect their outer networking. तो सबसे पहले हम जो है इनका जो इंडिविजुअल नेटवर्क है वो बनाएंगे, उसके बाद हम जो है इनका आउटर नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन का वाया मेन अपस्ट्रीम राउटर वो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो आईपीज़ वगैरह लिख लेते हैं, जो कि हमें आसानी हो जाए अपनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो सबसे पहले हम राउटर 1 जो हमारा मतलब ग्राउंड फ्लोर का रिसेप्शन राउटर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम मैनुअल करेंगे या हम जो है वो इधर हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है जिससे हम कर सकें। तो इधर हम इसको जो है इसका डिफ़ॉल्ट राउटर वाला एड्रेस देंगे और सबनेट मास्क इसका जनरेट होगा यहाँ पे, और उसके बाद हम इसकी DHCP जो है वो बना देंगे, क्योंकि हमारे इसके आगे हमारे पास हमारे होम गेटवे आएंगे, इसकी डिवाइसेस आएंगी और उनको ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस असाइन करता रहेगा। तो हमको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी ट्रैफिक जो है हमारे नेटवर्क से जानी है इसके डिफ़ॉल्ट राउटर से होकर जानी है, और जो पहला एड्रेस हमारे पास होता है 1.0 वो हमारे पास होल नेटवर्क एड्रेस होता है। तो इधर हमारी DHCP कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, और हम जो है इसका डिफ़ॉल्ट राउटर जो है 1.1 वो आगे किसी डिवाइस को असाइन ना करे, इसलिए हम जो है वो एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस की कमांड होती है DHCP की वो लगाएंगे, उसमें हम वो एड्रेस दे देंगे और ये किसी को असाइन नहीं हो सकता अब। तो यहाँ पे हमारे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम इसकी डिवाइसेस आगे ऐड करेंगे।
अब हम इनके जो आगे आईपीस जो हैं वो इनको डीएचसीपी कर देंगे स्टैटिक से। वो ऑटोमेटिकली जो है राउटर इसको असाइन कर देगा। ये थोड़ा टाइम लेता है डीएचसीपी ऑन होने में, तो इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे। ये अभी शुरू शुरू में जो है वो करता होता है, लेकिन थोड़ी देर तक ये ऑटोमेटिक जो है हमारा डीएचसीपी पूल वो इनको आईपीज असाइन कर देगा। इधर देखिए हमारे पास डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। हमारे पास इसको असाइन किया गया 192.168.1.2 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आ चुका है। सो इसका मतलब है हमारी जो इंटर नेटवर्क है रिसेप्शन डिपार्टमेंट की वो पूरी हो चुकी है। अब इसके जो है वो आईओटी डिवाइसेस ऐड करेंगे इसके बाद। उसके लिए हमें जो है एक होम गेटवे की ज़रूरत होती है। बेसिकली होम गेटवे एक हमारे पास राउटर होता है जिसमें जो है हम अपना अपने आगे आईओटी डिवाइसेस है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं वाया होम गेटवे। So they are the same level of devices, so they're gonna connect with crossover cables. uh, but if we will connect them with router, then we will connect them with crossover cables, and when we will connect them with switch, then we will connect them with straight copper wire. So in this network I am connecting them with the switch for security reasons, so we're gonna use straight copper wire. And we will change its SSID floor 1 and its VPA2 passkey 128. So now we're gonna add IoT devices for that department. So in each IoT devices we will connect them with floor 1 home gateway. So in here SSID we will enter the SSID of our home gateway and the passkey, and it will assign automatic their IPs and connect them with the home gateway. And here again we will SSID floor 1 WPA2 PSK for security reasons and the password of our home gateway. So we do this for all of the IoT devices. So now I am
connecting and arranging the IoT devices, and all the IoT devices of floor 1 are connected. So yeah, our reception department is completed. Now we will move to next department. And before moving to next department, we will add a tablet. And this tablet will basically control all of the IoT devices that are in the same home gateway. So we need to connect it to the same gateway that all the IoT devices are connected. So now we will move to our second network. And here we're gonna do our IP address of 192.168.2.1 and interface faster than 0 by 0. And now we gonna do same configuration of DHCP, but the network will be different for this DHCP. And our DHCP configuration is done. So now we're gonna add its devices. Now we're gonna connect laptop with its network and its other devices, and we're gonna add a home gateway for specific for this network, which is 192.168.2.0. So first we will assign its DHCP, and DHCP request successful. So now we're gonna
add home gateway, and the home gateway will be connected to its floor switch, which will be switch 1, and it will have SSID F2, and we will signing the same password, but the SSID will be different, and there will F2. Now we're gonna add its individual IoT devices, which will only accessed by the department of this router. It will not accessed by either of other department, which will be department reception or department finance. So we're gonna do the same process, which will be entering the SSID of floor to home gateway and its pass key, which we did in our first floor.
So we are entering the password of F2 and the SSID of F2. The process is simple, and but we if we will have the concept, and then we will easily do it. So I entered the RFID reader. The employee of department will have to scan its RFID card, and then they will be entered in the building. And now we are moved to our third department, which will be the finance department, and it will have the IP address of 3.1. And now we're gonna do the same process for the DHCP, which we will uh, then connect other devices to its network, like we did the same process in our first two floors. And now we again do the same process, but in this department we will have our server, which will do the transactions and also updates the database and accounting information of all of the users or clients. Now we'll also connect the laptop to our default home gateway, because for security reasons, if the laptop will be connected to switch 2, then it will have the direct access of our network, and it will then scan and will do other kind of things like that. So when it will connect to the home gateway via wireless, so it will not have the direct access of our network. And we also do same process for our server.
Now if you will notice, we are doing the whole same process again which we did in our first two floors. So in this individual floor I will add RFID reader again, because this department will not be accessed by other employees. So if our employee will have the uh, access of this finance department, and so only they will access the network of the finance department. अब हम लैपटॉप को अपने होम गेटवे से कनेक्ट करेंगे। इधर हम इसकी VPR2 जो हमने की फ्लोर 3 की लगाई थी वो इसको दे देंगे। तो अडेप्टर इज एक्टिव एंड ये कनेक्ट हो चुका है, और इसी तरह हम सर्वर का प्रोसेस करेंगे।
ऊपर वाले लैपटॉप्स को भी हम जो है वो अपने होम गेटवे से कनेक्ट करेंगे। So now we are labeling our project, and after it we will do our outer network configurations. So now we gonna do our outer network configurations, और इधर जो है हम अपनी क्रॉस ओवर केबल्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जो राउटर्स टू राउटर कनेक्टिविटी होती है वो सेम लेवल की होती है। और हम इधर अपनी लेबलिंग्स भी कर लेंगे पहले। हम इनको डायरेक्ट जो है वो कभी भी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशंस हो गई तो हमारा जो सिक्योर सिस्टम का जो वो हाइपोथेसिस है वो इधर ख़त्म हो जाएगा। सो हम इनको एक मेन राउटर जो हमारा अपस्ट्रीम राउटर होगा उनके थ्रू कम्युनिकेशंस करवाएंगे, जिसके लिए हमें जो है वो इन तीनों राउटर्स की ट्रैफिक हमें राउटर 3 पे भेजने की ज़रूरत है। बेसिक कम्युनिकेशंस तो दो की होनी है। हम जो है अपने थर्ड फ्लोर की कम्युनिकेशन जो है वो आउटर नेटवर्क नहीं भेजेंगे, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है हमारा उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। So now for our extra
fast Ethernet cables, we will use NM1FE-TX port. So it will give a extra fast Ethernet port. So we will connect it to other router. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जिस तरह अब राउटर 4 और राउटर 3 कनेक्ट हैं और इधर हम आईपी एड्रेस देने वाले हैं 192.168.5.0 इस होल क्रॉसओवर केबल को। तो इन दोनों के जो एंड पॉइंट है ना वो सेम नेटवर्क में होने चाहिए। लाइक अब रूटर 3 वाली साइड का जो होगा वो हमारे पास 192.168.5.1 देंगे हम, और राउटर 4 वाली साइड पे इस नेटवर्क में हम देंगे 192.168.5.2। और जब ये इंटर नेटवर्क में होंगे एक दूसरे के, सो दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। और उधर हम तरह तरह के अपने जो है वो राउटिंग एल्गोरिदम्स या राउटिंग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं, लाइक स्टैटिक राउटिंग, आईपी राउटिंग, सीरियल राउटिंग, ओएसपीएफ and many others like them. So now first we are creating the network between them, between the router 4 and router 3, and then we will do our static routing, which is mainly IP route. Now the connections are gone up, so it means the network is online. So now we are gonna do same process for router 6 and then the router below it, which is the finance department router. So here we're gonna do the same process, like we are assigning the 192.168.7.1 at one side and the other side of 192.168.7.2. And here our communication is successful. The messages are going to either of their sides. So now the networks are completed. So now we're gonna do our static routing.
and the manager department, reception department will communicate with each other. So the traffic from 192.168.2.0 will go to the point of main router, which will be 192.168.6.1. So we will do our IP route. अब हम रूटर 6 की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। जो भी ट्रैफिक आएगी फ्रॉम आवर मैनेजर डिपार्टमेंट और उसको जाना होगा हमारे रिसेप्शन डिपार्टमेंट की तरफ, लाइक 192.168.1.0, तो हम उसको वाया राउटर 3 इंटरनेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भेजेंगे। सो यहाँ हम अपने आईपी राउट की कमांड्स लिख रहे हैं। So our outer network communication of floor 1 and main upstream router is done. So we are moving to our second outer network configuration, which will be with manager department. So we will give the same IP route command if the traffic is going from network 1.0 to network 2.0.
So now the static routing for our router 4 is completed, and now we're gonna do our static IP routing for passing messages from router 4 to router 6. So now we are giving the IP address of the reception department, and the hop address of the network will be for router 3 is uh, the side of the reception department, which is 6.2. And here we will give the hop address 5.2, but at the end we're gonna give the reception department hop address of 5.2, and when the traffic reach the router 3, and then we will route through 6.2 to the network of 192.168.2.0. And this department will be leave alone because it can't communicate with either of the two departments, so it will be secured. It will not access by any device, not even by a manager. If a manager need to access that department, he will have to scan the RFID, and then he will have the access.